Today was again a very busy day, sorting out things for you, and it was very interesting. I was thinking about you all and about the people who have done so much for Sahaja Yoga. It is impossible, really, to say how many have worked for Sahaja Yoga with such interest and dedication. And this dedication is directed by divine force. That's why I think you people are not even aware how much you have worked so hard without getting any material gain out of it. And the joy has no value. We cannot evaluate in any human terminology, nor can we describe it as to how we feel the joy of oneness together. This togetherness is very much felt in Ganpatipuri. I see the leaders from all over the world have become great friends. There's no jealousy, there's no quarreling, there's no fighting, there's no domination, there's no shouting, nothing. Such beautiful brothers and sisters. Such a beautiful family we have created out of this beautiful universe. Now we have to maintain the beauty individually and collectively. Some people think that individually if you do something, that is all right. But if it is not related to the collective, it cannot be Sahaj. Anything that you do has to be related to the collective. Now to be individualistic is a trend in the modern times. And in that, how far we have gone into nonsense, that we know very well. Individuality is a personality within yourself, which has to be of different hues, of different colors, of different beauties. Like if you see the flowers, now every flower is different and individual. In its beauty, in its softness, in its fragrance, in its form, in its color, every leaf is different. But they adorn the whole forest, the whole garden, in such a beautiful manner that the whole thing works towards the collective. So the individuality is where we do not become like other people, exactly like military people as they are. The outside people may become like military people, but inside you become individual in the sense everybody has a different way of pleasing others, of teasing others, of loving others, of saying beautiful things. Everybody has a style of saying nice things and of offering your words of thanks and words of appreciation. This individuality is to be developed by all of you. That what is the new thing I can say to please? As people I have seen every day think what fashion I should have, what sort of a fashion I should wear, how I should become more fashionable. Outside, if you can think, how can I be more fashionable inside myself? In India, fashionable has a different meaning. It doesn't mean we know in England. I think many people don't know that in England fashionable means popular. Here fashionable means out of the
out of the blue, something special, something extraordinary is fashionable here. So if we could put our attention to this, how we could be more beautiful inside. When we are touching others' hearts, how we could be very pure in our expression, genuine in our expression, not artificially. Like we have seen also that when you are superficial, you will say, thank you very much, thank you very much, thank you very much. And you don't mean it. It's just a lip service. You don't mean it. But in Sahaja Yoga, when you want to thank you, see, it is really heartfelt. I mean, you say it from your heart. You have to put your hand on your heart, otherwise you just can't say it. It is that way that we should feel. And once you open that heart fully, opening of the heart is very important. And that, unless and until you can do it, you cannot enjoy anything in Sahaja Yoga. Because the heart where resides the spirit, and it is the spirit that emits the joy. So if you do not have an open heart, and if you are just living on very superficial level, you can never enjoy Sahaja Yoga. And this enjoyment of Sahaja Yoga is something to be really achieved and to be enjoyed. Because that's why you are here for. There's nothing else to offer in Sahaja Yoga but the joy of life. And that is the essence of all the achievements of life. Everything we do for the joy, but whatever we do for joy, after some times we find it becomes a sort of a reaction. So there is very important point that to make our individuality beautiful, we should not immediately react to people. Should not give our own opinion, I don't like it, I don't want it. But we should absorb the beauty of another person. Now supposing there's a flower you get. Immediately you will see the beauty of the flower, you would like to take the fragrance of the flower. But suddenly you say, I don't like flowers. Then what can the flower do to you? So one should not react, and one should not have such subtle idea about your likes and dislikes. Because it's a joy killer habit. It's a joy killer habit. If you want to enjoy, take enjoyment from every person, like the bee which takes the honey from every flower. You must develop that sweet personality within yourself. And then only you will know what is sweet, what is good. And the enjoyment from one person to another, from one collective to another, from one city to another, from one country to another, will be just a beautiful, like a swing. It will be like a swing, going up and down, enjoying yourself. That's what is your real divine sensitivity. And the divine just wants to do that. It's working out so many ways of giving you photographs, giving you miracles, working it out and making you believe that you are in the kingdom of God. But if you have all these angularities and if you have all these ideas about yourself, then please try to neutralize them. Now some people also feel that mother is angry with us or some sort of thing. I can never be angry with you. For what should I be angry? But if you think like that, forget it. First of all, you must see that something wrong with me. That's why I think like that. I must put myself right. So just to judge yourself through such ideas, and it's only your mental projection. It has nothing to do with your heart. So again, today, the first thing we have to know that in our heart lies the power to absorb, to enjoy the beauty of spirituality. There's a beautiful shloka which I had told Mahatma Ji that he should put it first. He said, I was a very small girl, but he listened to me, which is a beautiful
प्रातर नमामि. The first thing you have to say, pratar namami rudhi samspuradma tattvam satchit sukham paramahansa gatim turiyam. Meaning, early in the morning, I pray to that principle of my spirit, which is the truth, the attention, and joy, so that I should go to the highest state of my ascent. So opening of the heart is very important for all of us. मेरे ख्याल से सब लोग हिंदी तो समझ लेते हैं और सब लोग अंग्रेज़ी भी समझ ही लेते हैं करीबन, पर जिन लोगों को नहीं समझ में आता उसको एक छोटी सी बात कहना है कि अपना दिल बहुत बड़ा करना चाहिए. समुंदर के जैसे, जब समुंदर के किनारे आ जाते हैं तो जैसे बूंद सागर हो जाए, इस तरह अपने हृदय को बहुत बड़ा बनाना चाहिए, विशाल बनाना चाहिए. छोटी छोटी बात को लेकर के जो लोग झगड़ा खड़ा करते हैं और छोटी छोटी बात पे जो तुल जाते हैं, वो छोटे दिल के लोग होते हैं. और आत्मा का आनंद जो है वो शरीर के आनंद से बहुत परे. बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि माँ आप ऐसे कैसे इतनी हालत में रह लेते हैं, चपरासी के कमरे में रह लेते हैं, आप कहीं भी सो लेते हैं, कहीं भी बाथरूम में चले जाते हैं. क्योंकि इन सब जो कुछ भी आरामदेह चीज़ है उसका कोई ख़ास असर नहीं आता. मुझको तो आत्मा का आनंद जहाँ मिले उसी में आनंद आता है. और मेरे आत्मा का आनंद आप ही लोगों पर निर्भर है. आप लोग सब आनंद में आ जाएं तो मेरा आत्मा जो है बिल्कुल आनंद से भर जाएगा. तो मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप लोग सब आनंद में आ जाएं और आनंद में ही पूरी समय समाये रहें. उसका बाह्य स्वरूप कुछ नहीं है, अंदर ही की लहर है, अंदर ही में स्फुरण होने वाली चीज़ है. बाह्य स्वरूप कुछ नहीं है, पर बाह्य को देखते हुए जो अंदर में घटना होती है, आनंद की जो उत्पत्ति होती है और उसका जो प्रसार हो करके और सारे हमारे शरीर को जो पूरी तरह से ढक लेता है और फिर सारा ऐसा लगता है कि दुनिया ही उससे ढकी जा रही है, उस आनंद की मैं बात कर रही हूँ. पर उसके लिए बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए. सब लोगों को दिल बहुत बड़ा करना चाहिए और अपने को इसमें ढाल लेना चाहिए कि जो आनंद परमात्मा ने आपके लिए बनाया है वो आप खूब मौज से पी सकें, उसका आनंद उठा सकें और उसमें रम सकें. ये एक बड़ी भारी बात नहीं है सहयोगियों के लिए, क्योंकि अगर आपको मुझसे प्यार है तो आप जानती मेरा सागर जैसा प्यार है. तो मुझको आप प्यार करते हैं, मुझे अगर आपको हृदय में बिठाना है तो आपको भी सागर जैसे होना पड़ेगा. अगर आप सागर जैसे नहीं होंगे तो कैसे आप मुझे बिठा सकते हैं? मेरे कुछ हिस्से आप बिठा लेंगे, मुझे पूरी तरह से बिठाना तो बहुत बड़ा सागर जैसा दिल होना चाहिए. सागर के किनारे बैठे हुए हमें यही सोचना चाहिए और इस सागर से कहना चाहिए कि तुम हमें अपने जैसा विशाल बना दो. और सागर की विशेषता ये है कि सागर जो है सबसे नीचे की तह पे रहता है, नीचे, सबसे नीचे. इससे नीचे कोई चीज़ नहीं होती. सागर सबसे नीचे तह पे रहता है और सारी दुनिया भर की नदियाँ आकर उसमें उतर जाती हैं. वो सारी नदियाँ उसके उतर आने के बाद में वो सबको अपने अंदर समाते जाता है. फिर उसके बाद कमाल ये है कि सूर्य में तपता है, सूर्य में तप करके उसकी भाप बनाता है और उसी से बर्षाव हमारे सारे जितने भी प्रदेश हैं जिनमें लोग रहते हैं उनको सब उस वर्षाव से वो पूरित करता है. फिर से नदियाँ बह करके आती, फिर उसके अंदर समा जाती. अगर ये किसी टेकड़ी पे बैठा होता तो इसका क्या उपयोग होने वाला था? कभी का सूख के ख़त्म हो गया था. इसी तरह जो मनुष्य हृदय का विशाल होता है वो सबसे नीचे ही बैठता है, सबसे नीचे ही उतरता है. उसकी कोई मांग नहीं होती, वो सब चीज़ को अपने अंदर समाते जाता है. ये विशालता की निशानी है. जो सब चीज़ को अपने अंदर संभाले वही आदमी हृदय का विशाल है. वैचारिकता से अगर कोई कहे कि मेरे विचार इतने प्रगल्भ हैं और मैं विचार से ऐसा, तो वो बात नहीं. विचार जो हैं बहुत दगाबाज भी होते हैं. इसलिए जो चीज़ एक स्थिति है वो अपनी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जिसमें हम इतने अपने को खुश न समझें, अपने को इतने संतोष में लाएं कि हम सबसे नीचे रह करके सब चीज़ को खींच सकते हैं, सब चीज़ को अपने अंदर समा सकते हैं
और तभी फिर उसके अंदर आनंद की लहरें उठ सकती हैं। आज समुद्र के किनारे बैठे हुए जान लेना चाहिए कि समुद्र के अनंत उपकार हमारे ऊपर में है, और इसी प्रकार जो मनुष्य समुद्र जैसे होता है उसके अनंत उपकार इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति पर होते हैं। और आप सबके प्रति मेरा यही विचार है कि आप सब लोग महान लोग बने, यही मेरा आपको आशीर्वाद है। आता म्हणा म्युझिकचं तुमचं, मी तिकडे बसते. अजून वेळ आहे ना? चालेल. नागपूर किती वेळ? नागपूर लोकांचं झालं. नवीन गाणी बसवली. हो, आणखी मग त्याच्यानंतर मग आणखी बाकीच्यांना दिला का चहा? आत्ताच सुरू झालं शिवाजी. ते आधी करायला पाहिजे असेल. उद्या देतो मी. त्यांचं तसं ऐकलंही नाही मी. उद्या त्यांना सगळ्यांना चान्स देतो. माझं म्हणणं तुम्ही उद्या करा. उद्या कारण काय मी एवढं कोणी नाही आहे गाणारे. जी. तो विल हॅव मच मोर टाइम तुम्ही अच्छा. व्यवस्थित. आता पण कल तो कोई आ नहीं रहा ना गाना गाने? कल वो है ना कीर्ति शिलेदार. और परसों ते म्हणा थोडंसं तुम्ही म्हणा सगळं अर्धा अर्धा तास घ्या म्हणजे सगळ्यांच्या आज जी. पाण्याचं ठेवा. अर्धा तास म्हणा सगळ्यांना. अजून नोएडाला घेऊ. हां, नोएडाला घेऊ की बाकी ते युवा शक्ती आहे दिल्लीची, त्यांचं ऐकलं नाही अजून. त्यांचं ऐकलं पाहिजे. एक त्यांना द्या युवा शक्तीला. युवा शक्तीला पहिले घेऊ. नाही, तुमचं होत्या युवा शक्ती. तर माझं म्हणणं त्यांना पहिल्यांदा युवा शक्तीचं तुमचं, त्याची क्वालिटी तुमची फार बरी आहे ना. जी. युवा शक्ती. हां. किती वाजले? 8 वाजता. किंवा आज आमचं राहू देशमध्ये. हां, उद्या व्यवस्थित सकाळपासून तुमचंच ठेवा. आज काय म्हणू, आज युवा शक्तीचं, उद्या थोडंसं सरसीपी राहणार नाही शिवाय. हां. सकाळी सरसीपी राहणार नाही. काय कुठे जाणार? नाही, येतील का? सकाळी सकाळी नाही, संध्याकाळी म्हणते मी तुम्हाला. संध्याकाळी. हां, तुमचं संध्याकाळी ठेवा. कीर्ती शिलेदार आहे. हां, संध्याकाळी कीर्ती शिलेदार आहे. मग सकाळी आपण 7 वाजता बसू. उद्याला एवढं काम राहणार नाही. 6 वाजता बसू उद्या. कारण असं आहे, आता तिचं गाणं म्हणजे हेवीच गाणं होणार, क्लासिकलच होणार आहे की नाही. म्हणून आता थोडंसं फोक असं होऊ दे. दिल्ली युवा शक्ती.